Good morning, everyone. So, welcome to today's class. In today's class, I'll be talking about the fruit. This class is in continuation with my other classes of morphology of flowering plants. In my previous class, I've already spoken to about the flower, the inflorescence, root, stem, leaf, floral diagram, floral formula. Okay. So today we'll talk about the fruit. So let's move on to today's class. So first of all, we'll talk about how the fruit is formed. Okay. So as you have studied in my previous class of flower, the parts of a flower, right? So in that part, there is a part known as ovary. So what happens is ovary. This leads to formation of the fruit, and inside ovary there are ovules present. So the ovules they form the seeds, and the ovary it forms the fruit. Okay. You can see the diagram out here. So regarding seeds, I'll talk about that in my next class. So today it's only about fruit. So now what are the types of fruit? So basically there are three types of fruit, okay? True fruit, false fruit and parthenocarpic fruit. So when a fruit develops only from the ovary part, okay, it is known as true fruit. So now sometimes what happens, other than the ovary, a fruit may be formed from the other parts of the uh, फ्लावर ओके एक फ्लावर का आपने देखा है कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो ओवरी से अगर होता है अगर अगर पूरा पूरी ओवरी से होता है तो वो ट्रू फ्रूट होता है क्योंकि बेसिकली ओवरी से ही फ्रूट होती है अगर ओवरी के अलावा अगर अदर पार्ट से होता है जैसे कि आपका उसमें आपका थैलेमस है इनफ्लोरेसेंस है कैलिक्स है ठीक है अगर इन सारे पार्ट से होते हैं तो इट इज अ फॉल्स फ्रूट ओके इसको सीडोकार्प भी कहा जाता है एग्जाम्पल्स आर गिवन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी एंड ट्रू फ्रूट एग्जाम्पल्स आर मैंगो कोकोनट ओके and parthenocarpic fruit. Parthenocarpic क्या होता है? See, wait, what happens is basically a fruit is formed by fertilization of ovary. So when a ovary is not fertilized, okay, what happens? No seed is present in that. So therefore, that type of fruit is known as parthenocarpic fruit. Example is grapes and banana. Okay. Now we'll talk about what are the parts of fruit. So basically, a fruit is contains two parts. One is the wall, or also known as the pericarp, and other one is the seeds. So pericarp. Now, what are the layers of pericarp? In pericarp, there are three layers. Okay, outermost, then innermost, and the middle part layer. So outermost part is known as the epicarp. It is also known as the outer skin. Okay. Example is given here about mango. You can see the diagram. The outer part is known as the epicarp. Okay. Middle layer is known as the mesocarp. So basically in many fruits, middle part is the fleshy part, the edible part that you can eat, जो आप खा सकते हो. Okay. So basically middle का जो part होता है वो fleshy होता है, खाने वाला part होता है. It is known as the mesocarp. Then innermost is known as the endocarp. In mango, the innermost is the सीड पार्ट ओके द सीड पार्ट आउटर पार्ट मुझे है ना जो हार्ड सीड पार्ट होता है वो वाला ठीक है so epicarp mesocarp and endocarp these three are the layers of pericarp now अगर आपका जब आपका normally fruits may be dry or it may be fleshy so when it's fleshy there are many divisions of fruit type of fruit and when there is dry then there is no division now when we classify fruits जब fruits की classification होती है तो there are two basic factors on which a fruit is classified first of all जो कार्पेस प्रेजेंट होते हैं गाइनोशियम में वो आइदर फ्री फॉर्म में है या फ्यूज स्टेट में है ये सब मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया है काइंडली गो बैक टू माय प्रीवियस क्लास टू नो द बेसिक थिंग्स और दूसरा है कि आपका कितने फ्लावर्स एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट ओके द वन और मोर फ्लावर that so these two are the criteria for classification of fruits now based on that there are three type of fruits okay simple aggregate and composite now I'll just show you one thing see here in simple यहाँ पे देखिए पहला वाला simple fruit simple क्या होता है जब one single matured ovary से fruit develop होता है okay तो एक single flower का एक single matured ovary that is known as simple fruits fine then we'll come on to the aggregate वाला aggregate में क्या होता है when एक ही फ्लावर के बहुत सारे मेच्योर्ड ओवरीज होते हैं देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स एग्जांपल स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी ब्लैकबेरी ओके इन सिंपल वी हैव मैंगो ओके तो इन मैंगो है आपका और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो नॉर्मली हम खाते हैं कॉम्पोजिट क्या होता है सो व्हेन मैंने आपको याद है क्या था कि कभी कभी अदर देन द ओवरी इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है तो व्हेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस a fruit is developed, it is known as a composite type of fruit. Okay, example is jackfruit,
पाइनएप्पल इज देयर. ओके, सो नाउ यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिया आपके बेसिक देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए. ये देखिए सिंपल फ्रूट में. ओके, पिस्टिल यहाँ पे एक ही है देखिए, इज फॉर्मिंग दिस. देन अगेन एग्रीगेट फ्रूट में देखिए कि कितने सारे पिस्टल्स हैं, दे आर फॉर्मिंग दिस. एंड देन यहाँ पे देखिए इनफ्लोरेसेंस, जो आपका या तो वो कैटकिन हो सकता है, हाइपेंथोडियम हो सकता है. इसके लिए भी गो बैक टू माई क्लास ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, यू विल नो द एंटायर थिंग कि क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स क्या होते हैं. सो अगर इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है फ्रूट, देन इट्स नोन एज composite. So three things are there: simple, aggregate, and composite. Okay, they are the type of fruits based on these two criteria. So now we'll talk about the classification of fruit. So basically, as I've already told you how on what basis the fruit is classified in my previous slide, the criterias and the type of fruit. So here I have just given you in details, okay, the type of the fruits and also the divisions of the fruits. So now see simple fruits. Okay, so basically they are mono or syncarpous. Out here, the carpels they are fused. Okay, so and syncarpous is fused and apocarpus is free. So your carpels are fused in simple, and it may be two types, dry or fleshy. So now dry it is dehiscent or indehiscent. So what is out here dehiscent? So what happens, there are some fruits which they open up after they open the fruits open up after maturation. Okay, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ सीड्स है, उनका एक टाइम होता है जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तब जाके वो क्रैक हो जाते हैं, क्रैक करके ओपन, जैसे कि नट्स, आपने नट्स देखा होगा. सो देन लेग्यूम्स, जो आपके लेग्यूम्स जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो भी जब आपका जब मेच्योर हो जाता है तब जाके वो जो प्लांट है इट क्रैक्स ओपन. ओके, एंड द सीड्स दे कम आउट. सो दिस इज वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू इन द ड्राई पार्ट, द डेहिसेंट पार्ट ऑफ सिंपल फ्रूट्स. एक और पार्ट है आपका फ्लैशी, दैट इज द देयर आर अगेन डिविजन्स ऑफ ड्रूप, berry, pepo, hesperidium, and pome. Okay, these five, they are divisions of fleshy fruits of simple fruit. And dry, I've told you. So I will tell you what are these things in details in my next slide. So ये हो गया आपका simple का. Then aggregate. In aggregate, the carpels are in free state. Okay. So examples are Atereo. Okay, Atereo means basically Atereo means fruit. Remember. Okay, not to don't confuse it. Atereo means fruit. Okay. So Atereo of drupes, Atereo of achenes, Atereo of follicles, Atereo of berries. These are all fruits. Remember. Now next is the multiple. In multiple, it's collective fruit. Here it is Syconus and Saurosis. Okay, so Syconus, what is Syconus? These two are based on the type of the uh, inflorescence. Okay, so Syconus, it's when it's in hypenthodium inflorescence, it's Syconus, and when it is the spike or spadix or catkin inflorescence, it is the Saurosis type of fruit. Okay, now let's move on to the next slide. Here I've given you all the examples. This is very important. Remember these. Okay, now in see the simple part, in fleshy part. Okay, just look at this one, this part. Out here, this fleshy part. Now see this berry, drupe, pepo, hesperidium, pome, blausta. Sometimes there may be some questions, like simple questions. What are like what is the example of hesperidium? And like this, they'll give you the fruit name, what type of fruit it is. Okay, they'll give you a characteristic, simple characteristic. So remember out here, see drupe out here, drupe, it is also known as the stone fruits because it contains a stony uh, stony part, outer part. Okay, so and it's also one seeded, remember. So basically drupes are one seeded. So the examples out here is mango is there, then even coconut is also a type of drupe. Okay, then in berry, what is berry? In berry, what happens is that the outer part, okay, the outer part of the pericarp, this is the epicarp. So epicarp is basically, it's a thick layer, and then the mesocarp and endocarp, that is you cannot differentiate between the mesocarp and endocarp. आप नहीं बोल सकते कौन सा मेसो है कौन सा एंडो है. So both the part it is edible, आप खा सकते हैं इसको, it's fleshy. So and the seeds inside the berry, there are all naked seeds, ठीक है, कोई covering नहीं होता है उसमें. तो एग्जाम्पल आपका टमाटो है, ओके, बेरी का. ओके, पीपो एंड हेस्पेडियम. हेस्पेडियम याद रखिएगा, बेसिकली हेस्पेडियम क्या होता है, हेस्पेडियम जो है वो आपका एग्जांपल सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं वो हेस्पेडियम में आता है. ओके, और हेस्पेडियम एक ट्रू फ्रूट है, याद रखिए. अच्छा, पेपर जो है ये सब क्या है, ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं चीज, ये पेपो, हेस्पेडियम, पोम. ओके, पेपर में क्या आता है नॉर्मली आपका जो फ्रूट्स, जैसे कि आपका बॉटल गार्ड वाटर, आपका बॉटल गार्ड,
फिर आपका क्यूकम्बर, ओके। सो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स दे फॉल अंडर द पेपो पार्ट, ओके। और जो पोम है आपका, पोम एक फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि पोम में क्या होता है, अदर देन द ओवरी इवन रिसेप्टिकल पार्ट ऑल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ओके। तो यहाँ पे पोम जो है फॉल्स फ्रूट होता है। एंड द थैलेमस पार्ट, it forms the fleshy part of the pome. Example, in apple you can see that is edible. Okay, the fleshy part, also the thalamus part, जो fleshy part form करते हैं, it's edible. Remember, pome is a false fruit. Okay, so this is these things. Remember those. You remember these points, and also others I've told you, sources I've told you, seconds I've told you. So this is all about your divisions of fruit, and please remember the examples because out here see आपका जो आपका ड्राई फ्रूट्स में आपका है, मैंने बताया था आपको कि जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो जो सीड्स है वो वो जो वो प्लांट है वो क्रैक हो जाता है एंड सीड्स दे आर रिलीज्ड। सो लेग्यूम में यहाँ पे देखिए, लेग्यूम है, फॉलिकल है, सिलिका, सिलिकुला, ये आप एग्जांपल्स रिमेंबर द एग्जांपल्स, ओके। देन आउट हियर व्हेन नट इज देयर, then Samara, okay, Sipsela, Akene. What are the examples of these? Then in Schizocarpic, remember Lomentum, Regma, Cremocarpus, Coriander, देखिए. So these are all some examples which you have to remember for exam because these examples they come for the exam. Okay. So these are some questions that I have given you. Okay, before going to the questions, last part let's talk about the importance of fruits. कि fruits का function क्या होता है? So basically fruits what they do, they protect the seeds. Okay, as we know that fruits they contain seeds inside. So remember the fruit they protect the seeds. Okay, other examples क्या है कि fruit is also a form of food. So and fruit contains many nutrients. The fruits as you know that already, तो fruits में बहुत nutrients होते हैं, also fruit seeds को cover करते हैं, okay। So these are some of the importance of fruits. So if you like the class, please do press on the like icon, share it with your friends, and do subscribe to my channel for more such videos. Thank you very much for attending today's class, and do check on my next class of seeds. Okay, thank you so much. Bye bye.